Welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia. In this video, I am going to give quick revision of important text which repeatedly asked in UGC NET English exam. Right? So मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. First work, Advancement of Learning, which was written by Francis Bacon in the year 1605. Let's brief discuss about this work. Right? Advancement of Learning actually consisting in two books. Right? And this work is dedicated to King James the First. Remember, King James the First, this work is dedicated. Right? Two books consisting this work. एंड जो सेकेंड बुक है इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज. राइट, हियर इट इज़ राइट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ नॉलेज. राइटर डिस्क्राइब. ओके, नेक्स्ट वी हैव द लाइव्स ऑफ पोइट्स. आई हैव मैनी टाइम रिपीट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन इन UGC NET exam. Right, then you will have to remember the year of it and what exactly in this and the written by. So this work is written by Samuel Johnson in the year 1779, considered critical work in which he talks about 52 poets short biography. Right, next we have On Heroes and Hero Worship, which was written by Thomas Carlyle in the year 1841. This actually collection of 6 lectures. Okay, next we have Origin of Species, which written by Charles Darwin in the year 1859. Okay, now let's discuss some periodicals. Okay, first we have Gentleman magazine 1731, founder Edward Cab. The Rambler 1750, Samuel Johnson. The Critical Review 1756, Tobias Smollett. The Monthly Review 1949, John J.B. Foster. Right, guys, if you want a complete list of periodicals and magazines, so I have uploaded this video. Please do check on my channel. Definitely you will get all the list I mentioned, important periodicals and magazines. Definitely you will get 2 or 3 questions from this. Okay, next important work we have A Portrait of the Artist as a Young Man, written by James Joyce in the year 1916. Okay, this story actually about Stephen Dedalus. Complete story revolved around Stephen Dedalus. Okay, surrounding Stephen Dedalus. Next we have Chrome Yellow, which written by Aldous Huxley in the year 1921. This is the social satire in which love affair you can see, and the sensitive poet है और उसकी एक lover है. Right, तो about this work is it. Okay, next we are discuss Mrs. Dalloway, written in the year 1925 by Virginia Woolf. It is the story of a day. एक दिन की स्टोरी है. जिसके बारे में स्टोरी है वो मिसेस डॉलावे है, जो कि क्या है, इन दी वाइफ ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. उनकी वाइफ है और वो अपने पास टाइम को याद कर रही है एंड शी lost in her past memories. So this all happening in this novel, और ये एक दिन की नॉवल है. Right, मिसेस डॉलावे. एंड द पब्लिशिंग ईयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1925. क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं एंड मैचिंग्स में क्वेश्चन आ जाता है. ओके, नेक्स्ट वर्क वी हैव स्कूल फॉर स्कैंडल, पब्लिश्ड 1777, रिटन बाय R.B. श्रीधरन. राइट, दिस इज इन द कॉमेडी मैनर एंड फर्स्ट परफॉर्म इन लंदन. राइट, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस मीटाफर. व्हाट इज़ मीटाफर? सो गाइज, जब हमें कंपैरिजन करना होता है और हम इज़ और लाइक का यूज़ नहीं करते, देन वी यूज़ मेटाफर. राइट, कंपेयर अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट, उसी को मेटाफर बोलते हैं. जैसे कि हर हेयर अ हार्प. यहाँ पे हेयर जो है वो विमेन के हैं और जो हार्प है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो देखा, टू कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को कंपेयर करना विदाउट यूजिंग इज़ और लाइक. राइट, तो इसी को मेटाफर कहते हैं. और इन कंट्रास्ट आप कह सकते हैं स्माइल. स्माइली में क्या होता है, लाइक और एज का यूज़ करते हैं तब हम कंपेयर करते हैं, बट इन मेटाफर में हमें एज और लाइक का यूज़ नहीं करना पड़ता. विदाउट एज और लाइक हमें यूज़ करके अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर मेटाफर आता है. और स्माइल कहाँ पर आता है, व्हेन वी यूज़ लाइक एंड एज. राइट, जैसे कि टाइम इज़ लाइक मनी. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्माइल. Okay, her hair a harp, this is the example of metaphor. Okay, I hope you got it.
Oxymoron repeated many time in exam. What oxymoron exactly? This is the contradict itself, right? When we are just contradict, like bitter sweet, both the words are contradict to each other. जैसे कि bitter means खट्टा and sweet means मीठा. So this is the example of oxymoron, right? Oliver Twist, which published 1837, written by Charles Dickens, right? In this novel, in the starting scene, जो Oliver की mother होती है, Agnes Fleming, the name of Oliver Twist mother, Agnes Fleming, right? Oliver mothers. ये क्या होता है जब birth होता है, at the time of giving birth to Oliver, she got die, right? सम ब्रीफ पॉइंट्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ऑलिवर ट्विस्ट. तो ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो एक्चुअली क्रिटिसाइज करता है न्यू पुअर लॉ जो 1934 में आया था उसको, राइट. नेक्स्ट वी हैव ऑर्फन ऑलिवर. ये ऑर्फन होता है. स्टोरी लाइव्स ऑर्फनेज, इसकी जो कंप्लीट स्टोरी है जिसमें इसकी जो लाइफ है वो ऑर्फनेज में निकलती है, राइट. एक मिजरेबल लाइफ को ये फॉलो करता है बिकॉज एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इसकी मदर जो होती है एग्नेस, उनकी डेथ हो जाती है एंड अनमैरिड विमेन होती है वो एक्चुअली जिन्होंने इनको जन्म दिया होता है. एंड फिर क्या होता है कुछ समय बाद ये ऑलिवर जो होता है रन अवे हो जाता है, मतलब भाग जाता है लंदन से, ऑर्फनेज से भाग जाता है क्योंकि ही चेंज ऑर्फनेज टू ऑर्फनेज में इसको चेंज करते रहते हैं मतलब टाइम टू टाइम. तो फाइनली ये परेशान होकर भाग जाता है लंदन एंड वर्क विद फैगिन. एक फैगिन एक नाम का कैरेक्टर होता है इस नॉवल के अंदर जो कि पिक पॉकेटर होता है, उसके साथ ये वर्क करने लग जाता है. और लास्ट में नॉवल में क्या होता है, इसके जो पेरेंट्स होते हैं एनी हाउ रिवील्ड हो जाते हैं कि हु इज़ द रियल पेरेंट्स ऑफ हिम, और इसको इनहेरिटेज मिल जाता है अपने पेरेंट्स का. एंड इन द नॉवल ही अडॉप्टेड बाय मिस्टर ब्राउनलो. एक नॉवल मैन होते हैं नॉवल के अंदर, जेंटलमैन होते हैं जो कि इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और फैगिन को हैंग कर दिया जाता है लास्ट में क्योंकि ये पिक पॉकेटर होता है. एंड द सर्जन डिस्कवर दैट ऑलिवर मदर इज़ अनमैरिड विमन. जो सर्जन थी जिन्होंने हेल्प किया था इनके बेबी को एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ, तो वो जो सर्जन थी उनको शी कैम टू नो अबाउट दैट शी इज़ द अनविमन मैरिड नेम एग्नेस, ओके, द मदर ऑफ ऑलिवर, राइट. Next, I'm going to discuss about T.S. Eliot, right? The function of criticism, the work written in 1923. This is actually reaction to Murray G. Middleton Murray. This is the complete name of him, who is in his essay Romanticism and Tradition. Romanticism and Tradition के writer हैं Murray, जिन्होंने disputed किया था some ideas that Eliot put forth in his earlier work, Tradition and Individual Talent, विच पब्लिश 1919. तो उसी के रिस्पॉन्स में लिखा गया था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट. नेक्स्ट वी हैव P.V. शैली यूज्ड इमेज ऑफ फैडिंग कोड. फैडिंग कॉल की इमेज को इन्होंने यूज़ किया है डिफेंस ऑफ पॉइजी विच पब्लिश्ड 1840. रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर, टेंशन, बैलेंस एंड आयरनी. ये सभी के सभी मोर सिग्निफिकेंट है किसके द्वारा? According to 𝗫𝗺𝗺, the founder of New Criticism, right? We studied him in New Criticism. According to him, कि सिर्फ कंटेंट होना is not enough in the text. तो हमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है टेक्स्ट में? स्ट्रक्चर, टेंशन, बैलेंस, आयरनी. These are the more significant, right? Not only content. Hope you guys understand what I'm just going to make you understand, right? Next we have Noam Chomsky. Noam Chomsky theory of language include rule system which used in term generative and transformational, okay, and developed idea of universal grammar. Noam Chomsky developed the idea of universal grammar in acronym UG, we can say, which came in the year 1980, right. Understanding grammar dependent two elements. कौन से टू एलिमेंट्स है वो? प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स, प्रिंसिपल्स, फीचर्स एंड वेरिएबल्स, राइट. दिस इज द PYQs. ब्रज बी खचरू create 3-circle model of world Englishes. This is the work which published 1985, in which he talked about English involved. There are 3 interconnected ring. Name the inner circle, the outer circle एंड दी एक्सपेंडिंग सर्कल. एग्जाम में पूछा गया था इनर सर्कल और आउटर सर्कल ऑप्शन में था, थर्ड वन सर्कल कौन सा है? तो एक्सपेंडिंग सर्कल वॉज द थर्ड वन. दिस वॉज द PYQs, ओके. नेक्स्ट वी हैव द फैमिन मिस्टिक, फेमिनिस्ट टेक्स्ट पब्लिश
1963, written by Betty Friedan, right? Next we have Sexual Politics. This is also the feminist text, published 1970, written by Kat Millett. Next we have The Bridge Called My Back, published 1981, written by Cherry Morga and Gloria E. Anzaldúa, right? Next we have Gender Trouble, published 1990. Judith Butler, many times have been repeated in UGC NET English exam. So do remember the year and the writer of these feminist text. Okay, sometime आपसे वो आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्क फेमिनिस्ट टेक्स्ट है और नहीं है. देन यू मस्ट नो अबाउट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फेमिनिस्ट टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंप्लीट लिस्ट ऑफ फेमिनिस्ट टेक्स्ट विच हैव बीन I uploaded on my channel. You please watch that video of mine, right? Next we have George Orwell, right, who wrote Lear Tolstoy and the Fool in the year 1947. Important text already have been asked in UGC NET exam, right? Let's discuss Chicago School of Critics or Aristotelians, right? Formed in the year 1952. Aristocrats, okay, new Aristocrats. The member of Chicago School of Critics and New Aristocrats are R.C. Crane, Alder Olson, Richard McKeown, and आपका Mormon McLean and Bernard Winsberg are the members of Chicago School of Critics. Already have been asked in UGC NET exam. So important question है, इसको आप रिमाइंड कर लीजिएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिटन बाय हेनरी जेम्स, द आर्ट ऑफ फिक्शन, पब्लिश्ड इन द ईयर 8885, राइट, 1885. नेक्स्ट वी हैव एडगर एलन पो, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, द फिलोसॉफी ऑफ कंपोजिशन, विच पब्लिश्ड 1846. नेक्स्ट T.S. Eliot, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, पब्लिश्ड 1923. वर्जीनिया वुल्फ, Modern Fiction, published in the year 1919, right? Let's discuss some periodicals. The Tatler, 1709, Richard Steele, the founder. The Spectator, 1711, also Richard Steele. The Review, Daniel Defoe, in the year 1704. The Examiner, Jonathan Swift, in the year 1711. इनका year, इनके founder and the name of periodical must remember, cause important in exam point of view, because chronology में matchings में आपको questions आते रहते हैं, right? Next important point I have mentioned regarding postmodern literature, what they are just belief, okay, what their belief and what they follow. So first of all, they used metafiction. Metafiction is used by पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर. गाइज रिमेंबर, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके, ऑप्शंस जो इनके देते हैं कि आपको चूज़ करना है कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर किस चीज़ को फॉलो करता है, देन must remember these are the keywords, okay, help you to crack or to choose right option in the examination. क्योंकि whatever you have studied, definitely everything has gone from your mind when you sit in examination hall, just because of the frustration and kinds of fear we have, right? This is my own experience, I'm just telling you. So first you have to just remember all the points, okay, key points you will have to remember. Just do a very deep work about it, okay? Like I'm just talking about the postmodern literature, then what we have to remember, keywords like metafiction, unreliable narration, right, self-reflexity they are just talking about, and the intertextuality. Intertextuality means text is connected to kinds of text are connected to each other. This is the intertextuality, right? So this is the points that we have to remember to know about the postmodern literature, okay? See guys, this point have been asked many times, repeated. Smallest unit of sound phoneme को बोलते हैं, right? इसी लाइन को डिफरेंट तरीके से वो लोग पूछ लेते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, दिस इज कॉल्ड फोनीम, ओके? तो मैचिंग में क्वेश्चन ये अभी लास्ट ईयर 2024 में भी आ रखा था. इफ़ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर एग्जाम, देन यू कम टू नो अबाउट इट. सो रिमेंबर इट, ओके? द मोस्ट important part of my video, William Shakespeare. In this video, or I will tell you how to remember all the text
which is important for exam point of view, written by William Shakespeare. Okay, so first you have to remember first literary phase 1585 to 94, ये इनका फर्स्ट लिटरेरी फेज है, राइट, जिसमें इन्होंने देखिए इनके वर्क को रिमेंबर करना इट्स हार्ड कि कौन सा वर्क कब लिखा गया है. Remember these, Christopher Marlowe influenced in this phase, right? This is the first literary phase I'm just talking about. Then Christopher Marlowe influenced in this phase. So Henry the Sixth, part 1, 2nd and 3rd, written in the first phase of literary phase of William Shakespeare. Richard the Second, Third, Titus Andronicus, Comedy of Errors, Venus and Adonis, Rape of Locrist are the text which written in first literary phase, which was 1585 to 1594, right? बिकॉज यूजीसी ने ना अभी जो एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है क्वाइट चेंज कर दिया है, इन विच ही आस्क्ड, राइट, क्रोनोलॉजी मैनर, एंड कुछ फेमस वर्क दे देते हैं एंड कुछ एकदम माइनर से वर्क दे देते हैं. देन यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज विच यू हैव टू प्लेस इन फर्स्ट प्लेस एंड द सेकंड. सो इट मस्ट फॉर यू टू रिमेंबर first literary phase, the works written by, and the now I'm just going to discuss second literary period of William Shakespeare, which during 1594 to 1600, in which he wrote the important work like Richard the Second, right? Richard the Third written in the first literary phase and Richard the Second written in the second literary phase. देखा कंफ्यूजिंग है ना, रिचर्ड द सेकंड लिखा जा रहा है सेकंड लिटरेरी फेज में और फर्स्ट फेज में रिचर्ड द थर्ड लिखा गया है, राइट. हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 and 2 written in the second literary period. Okay, Henry the Fifth, Midsummer Night's Dream and The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, all the work written in the second literary period, which during 1594 to 1600. And next, As You Like It and Twelfth Night, also written in the second period. Okay, now I'm going to discuss third period of William Shakespeare, which 1601 to 1608, right? In third period he wrote his most or major tragedies. एक्रोनिम हॉकम से आप इसको याद कर सकते हैं, लाइक H for Hamlet, O for Othello, K for King Lear and M for Macbeth. This is the trick to remember all the tragedy in chronology manner, because chronology manner is most important pattern of UGC net during these days. Okay, so H for Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth are already set in chronology order. Next we have Antony Cleopatra, All Is Well That End Is Well, Measure for Measure. Kinds of work written in the third period, which during 1601 to 1608. Basically, we have total four literary period of William Shakespeare work divided into. Okay, the fourth literary period during 1608 to 1613. Okay, in which he wrote Winter's Tale, Cymbeline and The Tempest. Always remember, when The Tempest in the option, always put right एट द लास्ट, क्योंकि ये लास्ट में इनका लिखा गया, लास्ट पीरियड में और लास्ट का ही है. लेट्स डिस्कस द कोलैबोरेशन. जो वर्क इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखे थे वो कौन से इनके वर्क हैं, लाइक हेनरी द थर्ड, द टू नोबल किंग्समैन आर द टू वर्क्स विच रिटन इन द आप बोल सकते हैं कोलैबोरेशन में, जो ठीक है अकेले ना लिखकर जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, कोलैबोरेट किया है, ठीक है. देन वी हैव प्रॉब्लम प्लेस written by William Shakespeare, like All Is Well That End Is Well is considered problem play. Measure for Measure and Troilus and Cressida are considered problem plays of William Shakespeare. Then we have Roman plays. Julius Caesar, Antony and Cleopatra and Coriolanus are the text which written in the Roman plays, considered Roman plays. Okay, I hope आपको whatever I have described in the video आपको पसंद आया हो. Please do subscribe my channel if you really want कि kinds of informative session मैं आप लोगों के लिए daily लेकर आऊँ. Must you have to remember, then you have to subscribe my channel, like my video and also leave comments also, because right. And at last I want to say just enhance my subscriber, only then I will motivate to upload kinds of informative videos. Till then, bye bye, in the hope that you guys are like my video and subscribe my channel. Okay, bye bye.